इस्लाम धर्म की आत्मा हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है, या कोई भी धर्म की आत्मा है, उन धर्म विदेशी धर्मों की आत्माओं से अम्मा प्रभावित होती है, माने ब्रह्मा प्रभावित होता है। राम वाली आत्मा प्रभावित होने वाली नहीं है। माना बाबा कोई भी धर्म की आत्माएं हो, कोई भी धर्म की आत्माएं हो, लेकिन उनमें आधारभूत आत्मा ही प्रभावित होती है, बीज रूप आत्माएं प्रभावित नहीं होती। माता जी, बाबा इज सेइंग whether it may be any religion, but the root forms, the seed souls are not influenced by the others. The root souls are influenced by the others. This applies to every religion. Okay, correct, understood. So between them there is a difference. So what between the seed soul and the root souls, there's always differences, like any religion we are looking at. Okay, now the question is, how is this differences in the mind affects the actual physical wars that are going on now? That is the question. I'm so trying ये to जो भी जो हो रहा है, ठीक है, ये उनका गुण धर्म है कि वो प्रभावित नहीं होते हैं। ये उनका गुण धर्म है ना, या सभी के लिए लागू होता है। तो ये जो अभी फिजिकल वॉर हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, ये किस आधार पर प्रभाव डालता है उन पर? युद्ध पर, दोनों के युद्ध के आधार पर ये प्रभाव पड़ रहा है। Because of the war between them, the effect is seen on the outsiders. Okay, so that was the answer I was trying to see. Because of the mind, the power of the mind, that whole vibrations is affecting in a different way outside. That's it, isn't it? जो घटता है बीज रूप आत्माओं में, जो अंदरूनी तौर पर घट रहा है, वो बाहर देखा जा रहा है। हाँ। Yes. So Baba, so the same thing now when you said that when the destruction of all the religions. ऐसे समझ लो, वहाँ की बात तो छोड़ो। Destruction of all the religions. सन 76 में इंडिया के अंदर जब एडवांस पार्टी निकली, तो बाहर की दुनिया में जनता पार्टी निकल पड़ी। Just like in 2076, when the advance party came up. एडवांस पार्टी ब्राह्मण की दुनिया में। 2076 when the advance party came up. 1976. 1976. वही 76, 1976. When the advance party came up, the Janata Party, meaning the party belonging to the public, it came up. बाहर की दुनिया में। In the world of in the outside world. इंडिया में। In India. Yes, I know. जनता पार्टी आई, और जनता पार्टी का मुखिया निकला जयप्रकाश नारायण। And the head of the Janata Party was Jayaprakash Narayan. और ब्राह्मणों की दुनिया में जनता पार्टी का जो मुखिया है वो भी नारायण। And the head of the advance party, the head of the advance party, he was Narayan. नारायण। उसी समय जनता पार्टी का जो मुखिया था, उसको सपोर्ट करने वाला मुरारजी देसाई भी निकल पड़ा। Okay, what happens? कैसे मुरारजी देसाई? Spiritual happens in the real world. Okay, so Baba, now I just want to understand one point. One point is the seed souls. Okay, the seed soul. The Baba says the arrow of knowledge. Arrow of knowledge will actually literally destroy. Okay, to some. To some. It brings destruction to some. When people get injured, they feel arrow of knowledge. Arrow of knowledge. Arrow of knowledge, which you arrow shoot. Of knowledge. Arrow of knowledge. Okay, it can be a destructive thing to some, and it can be a very beneficial thing to some. Okay, so we children, we accept the arrow of knowledge is very beneficial, but for some they totally don't want it. You know. So is that how the seed soul, once they are completed, the 108 seed souls of the different religions are completed, is that how they're going to cause the actual destruction of all the religions physically through the knowledge? Because the knowledge will be in contradiction to what the physical people are going through.
when they have Sorry. dislike Can- towards. is that clear? Is that clear? Am I making myself clear? Mataji. Okay. Basically, what I'm trying to say, for example, the seed soul of Christian. Hmm. Okay, he is now going to go and tell Baba's knowledge to the root souls of Christians. Okay, and then the Brahma roots, Baba is the root. say it's the seed soul of After maybe they become Christians. perfect. Hmm? Very Once after they become perfect, the seed soul. हाँ. okay, The 108 seed soul, they become perfect. So Hmm. she's asking, they will go and tell knowledge to the base souls. base souls, Basic the souls. root souls. Okay, and then the root souls are of course connected with the outside world already. Hmm. So now there will be a conflict. Will this arrow of knowledge actually, is it directly linked to the destruction of the actual religions that we will see in the future? Which arrow of knowledge which the Which root is the form seed souls soul, will the seed narrate. souls giving and giving. The root form souls which narrate to the seed form souls which narrate to the seed form root form souls. And And they they will- will They- connection with outside It world. becomes it leads to destruction. Destructions, yeah. This is the question. Yeah, this is a question. This is your question. Something like that. उनका ये प्रश्न है कि बाबा ने कहा ना कि जो ज्ञान बाण है, हाँ, तो ज्ञान बाण जो है वो किसी को चुभते हैं, किसी को अच्छे लगते हैं हाँ और किसी को चुभते हैं. हाँ तो उनका प्रश्न ये है कि जो बीज रूप आत्माएं हैं वो आधारमूर्त आत्माओं को जाके ज्ञान देंगी. हाँ, देंगी भविष्य में. हाँ, जब वो कंप्लीट हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी ना. अभी भी तो दे रही है. जो बीके से निकलने वाले आ रहे हैं वो बीके है ना, और वो बीके से निकलने वाले इधर आ रहे हैं, उनको राम वाली आत्माओं के द्वारा ही तो ज्ञान बाण मिल रहे हैं. Those who are coming even now from the basic, they are receiving the knowledge of arrows from the soul of Ram itself. Okay, and then they will go out to the physical world and pass the same knowledge, which is not going to be accepted by the real people outside. हाँ. Okay, so is that how the Destruction. destruction will तो occur? बाबा उनका प्रश्न ये है जो ज्ञान बाण बीज रूप आत्माओं से आधारमूर्त को मिले, आधारमूर्त से बाहर दुनिया को मिलेंगे, तो बाहर- ये विनाश के निमित्त बनेंगे. बाहर की दुनिया को ब्रह्मा कुमारी अभी दे रही है. ब्रह्मा कुमारियों में तो भक्ति मार्ग अभी भी चल रहा है बाहर की दुनिया से प्रभावित होकर के. और वो सही नॉलेज नहीं दे रही, वो मिक्स करके झूठी नॉलेज दे रही है. When now the Brahma Kumaris are giving knowledge to the outsiders, but they are not giving the true knowledge. They are mixing the knowledge. They are interpreting the knowledge. So when the seed souls start giving knowledge, that is going to cause the physical destruction of the religion, isn't it? मना प्रश्न यही है बाबा कि बीज रूप आत्माएं आधारमूर्त आत्माओं को ज्ञान देंगी, आधारमूर्त आत्माएं बाहर वालों को ज्ञान देंगी. तो ये जो ज्ञान आया ये बीज रूप आत्माओं से आया है. हाँ. तो यही विनाश के निमित्त बनेगा, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना. धर्म को विनाश करेगा. हाँ, सच्चाई जब निकलती है तो झूठ का विनाश होता है. When the truth is revealed, then the false is of course destructive. Yeah. So that's what I want to understand. So therefore, the arrow of knowledge can be a source or a cause of destruction. ज्ञान के बाण जो है वो निमित्त बनते हैं किसी न किसी तरह डिस्ट्रक्शन के. हैं? विनाश के निमित्त किसी न किसी तरह बनते हैं ज्ञान के बाण. हाँ तो ये मैं जानना चाहती हूँ, कंफर्म करना चाहती हूँ, ये सही है ना? हाँ. यस. To some, to some like us, okay, we accept Baba's as true. असत्य की दुनिया For को others, नष्ट they कर won't देते हैं. accept it. It distracts the असत्य को false नष्ट कर world. देते हैं. It distracts the false. It distracts the false world. Exactly, exactly. So Actually her question was, she asked me, Shankar causes destruction. no, that is You are different. telling That's different. destruction of all religions. That one is that's a different question. That one is whether Shankar inspires Actually destruction. Shankar causes destruction. Hmm. And destruction means he destroy all other religions and establish the one true ancient deity religion. Hmm. So how it happens? How is it the other religions will be destroyed? What will be the medium? You want to know the medium? How will the other religions will be destroyed? Because if you say Shankar causes No, Shankar doesn't cause. I said Shankar inspires, isn't it? Hmm. He doesn't actually cause destruction. if you say Brahma established, Vishnu sustains and Shankar destroys. Hmm.
Shankar caused So, destruction. how is the role of Shankar played in this? How Then- actually is what I think so like what she said. Okay, maybe let me just Okay, rephrase it. let Let me you ask rephrase it to me. what I understood, okay? Because I understood that Shankar, because Babas has said that Shankar is not, one only Baba says Shankar's heart is very mysterious. It's very difficult to understand his heart. Then in one discussion, Baba says Shankar inspires the destruction. So how is this? So destruction here, as I understand, is the destruction of the religions, because Shankar establishes the one main religion. Okay, so is that? So I want to have an explanation on that, On what? because I'm not very clear on this what I've just asked. The cause of destruction. On the destruction, how does he actually play a role In destruction. in the actual? Does he inspire it, or does he actually cause it? He inspires it through the seed soul, isn't it? वाली Not very clear. शंकर का पार्ट जो है इसके लिए बाबा ने विनाश कराने की निमित्त बनती है, लेकिन स्थूल रूप से है ना वो इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरणा करते हैं। तो उनका प्रश्न है कि ये किस तरह से वो प्रेरणा देते हैं, लेकिन जो विनाश होता है वो किस रूप में कैसे होता है, वो निमित्त कैसे बनते हैं? ये अंदर की दुनिया में विनाश होगा, संकल्पों में होगा, कि पहले बाहर विनाश होगा। Will the destruction take place in the seed form world, in this world, in the world of we Brahmins, or in the outside world? The outside world. नहीं, मकान बनता है तो पहले अंदर बनता है या आउटसाइड बनता है? बोलो बोलो। When the house has been built, is it built planned before, or is it been laid practically? He's a planning, isn't it? It is been planned first. He सूक्ष्म plans है। first, yeah. प्लानिंग ही Yeah, सूक्ष्म, subtle form. Yes. वो बड़ा रूप है मकान। Mm. ऐसे ही विनाश भी पहले अंदर है। In the mind. So he actually inspires. सच्चाई का और झूठ का युद्ध है। So for example, the There is destruction the fight of the- between the truth and the false. Hmm? There is the fight between the truth and the false. Yes, correct. Well, which obviously the truth will win at the end. But okay, so the destruction of the actual religion physically happening, he inspires it, doesn't he? जो स्थूल रूप में प्रैक्टिकल जो विनाश होता है ना बाहर, हाँ, वो शंकर प्रेरणा देता है, इंस्पायर्स। बाहर को प्रेरणा नहीं देता। शंकर अंदर के जो संकल्प हैं झूठे और सच्चे, वो झूठे संकल्पों को नष्ट करने के लिए जो शिव के द्वारा सच्चाई निकलती है, वो प्रेरणा देते हैं झूठ को खत्म करने में। The truth which comes out from the mouth of entering, when the Shiva enters in him, and the truth comes out, it becomes Inspiration. हाँ, it becomes the inspiration to cause the destruction. Correct. Correct. So he inspires The it thoughts which through the thoughts, हाँ, but physically somebody else is doing it. स्थूल रूप में कोई और कर रहा है, लेकिन ये सूक्ष्म संकल्पों की जो बात है वो पहले फर्स्ट हाँ, पहले संकल्पों में आता है, फिर वाचा में आता है, फिर प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों में आता है। first it comes in mind, then in vocals, and then in organs. So the organs are done physically outside. So The the action is done physically outside. प्रैक्टिकल जो है वो बाहर होता है, बाद में और जो ऑर्गन्स की बात है ना, जो हाँ, वो बाद की कर्मेंद्रियों बात की बात है, कर्मेंद्रियों की बात है, वो बाहर बाद वालों की के बात लिए है। He just sets the thoughts. Shankar just sets the thoughts. Just inspires the thoughts. Okay. वो सिर्फ प्रेरणा देते हैं। That's how he does his destruction. संकल्पों के द्वारा सच्चाई जो बाहर निकलती है, वो ही प्रेरणा है। प्रेरणा itself means the truth which comes out, In itself will the cause. thoughts of the mind which comes out, that itself is the inspiration. Yes. So that is the mysterious part of Shankar, correct? That is one सच्चाई of the mysterious parts. सच्चाई स्थायी है,
और जो झूठ है वो स्थायी नहीं है, वो नष्ट हो जाता है। The truth is stable, but the false is not stable. It gets destructed. फॉल्स इज डिस्ट्रक्टिव। सच्चाई जो है वो डिस्ट्रक्ट होने वाली नहीं है। The truth never destructs. It is not destructible. The false is destructible. Yes. So that is what Baba means by his. इसलिए by बोला the- इस्लामी पहले मरेंगे। This is why it has been said the Islamists will die first. Yeah. So here now I'm a bit confused again. Islam will die first. Is that physical death or brain death? again the question. वो ज्ञान को नहीं समझते, Okay. इस्लामी ज्ञान को नहीं They समझते। don't understand the knowledge. The Islamists don't understand the Yeah. knowledge. उनके दिमाग में बुरके वालियां भरी हुई हैं, Burke, महाकालियां। the Mahakalis are filled in it, which who wear burqas and Okay. Right. और मरने वाले हैं। they are going to die. Huh? They are Yeah. going to die. Yeah. So now we are in the Muslim country. That's why I'm asking. क्योंकि हम मुस्लिम इस्लामियों के पास इस्लामियों के पास एटमिक एनर्जी नहीं है, क्रिश्चियंस के पास एटमिक एनर्जी है। the Islamists don't have atomic energy, No. but the Christians Christians have it, have it. yeah. हाँ. क्रिश्चियंस के पास एटमिक एनर्जी है। इस्लामियों की संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो पॉपुलेशन हावी हो रही है Yes. क्रिश्चियंस के ऊपर। Yeah. बहुत हावी हो जाएगी तो Yeah. उनका दिमाग काम नहीं करेगा क्रिश्चियंस का। The one is Down. Islam. Islam don't have The brains. Islam, Very the true. population of the Very true, Islamists, Baba. Muslim leaders. Oops. Muslim leaders don't have brains. Mataji, Baba is saying the population of the Islamists, I can't go back to Malaysia now. the population of the Islamists is increasing, and due to this increase, they are occupying the Christians, and if their mind will go wrong, then just start bombarding. Yeah, the Christians are very intelligent people, but Muslims are very stupid people. Honestly. Yes. Correct, Baba. Christians जो है वो बहुत They have समझदार the brains. समझदार है। है, लेकिन उनके कंपेयर में मुस्लिम्स बहुत stupid है, Muslims बेवकूफ are है. stupid. They don't have the brains. Honestly, Baba. That is true. Baba is agreeing with you. Baba is what? Agreeing with Agree. you. Yes, it is true, Baba. Because if you see Muslim leaders and Christian leaders, who was more successful? It is the Christian leaders, not Muslim leaders. Muslim leaders, Malaysia #1 Muslim leader, real stupid. Apart from Mahathir, he because got Mahathir Indian is the blood. name. Mahathir is the Mahathir name. is got Indian blood. Mahathir, Mahathir. Prime Minister. Prime Minister, former Prime Minister Mahathir got Indian blood, so Mahathir. big a brain. महादेव, But now fully Muslim. But they are महादेव Muslim. वहाँ का कोई They don't मिनिस्टर have है, brains. वाइस Honestly. मिनिस्टर, वाइस Former minister. Former minister. Prime Minister. Yeah, The it's rest true, are Baba. stupid. It's true. It's very true. But like can Baba see said, it. Baba said in one VCD, the Christians have impure intelligence. एक बीसीडी में बाबा ने बोला है कि I अपवित्र like this. उनकी समझदारी जो है वो Random अपवित्र homework. है, क्रिश्चियंस की जो Good That's why समझदारी they're है, creating all the atomic bombs. इसलिए वो एटॉमिक बॉम्ब्स क्रिएट कर रहे हैं. They are very good planners. उनका है एटम बम और हमारा है आतम बम। Ours is more greater. Baba's Atom. is greater. Atom. yeah. आतम, Yes. ये आतम बम, आत्मा बम। उनका है एटम बम। Shankar. Number 1. हर हर बम बम। Har Har Bam Bam. Number 1. Shankar. Nobody greater than than him. Correct. Intelligent. You understood, Mataji? Any questions you have? There's so many questions will come up, but never mind. Yeah. Okay. Otherwise, I'm thinking of all kinds of. If you see all the notes, their currency notes like India or US, but only in America, every note it is stated trust in God.
every In God all, we all trust. the currencies, all the notes, the money, if you see all the countries, only in America it is stated. If you see the American currency, it is stated trust in God. Why? ट्रस्टिंग गॉड Yes, why only in America? जो भी करेंसी है ना बाबा, जो भी देशों की करेंसी है उनमें कहीं भी ऐसा नहीं, लेकिन अमेरिका की एक ऐसी करेंसी है जिसमें लिखा है ट्रस्ट इन गॉड। है ट्रस्ट इन गॉड, विश्वास विश्वास किया जा विश्वास सकता है। in ईश्वर ईश्वर। हाँ। भगवान तो एक अमेरिका की ही करेंसी है जिसपे लिखा है, और कोई ऐसी करेंसी नहीं है। नो करेंसी वो करेंसी अगर ऐसी है तो उसकी कीमत बढ़ती जानी चाहिए। वैल्यू If it is like that, then its value should go on increasing. Yeah, it's very high. The value is high in America. हाँ, it is compared to the world currency of the world. The currency yes of the it's world number is one yes it is Number one. बाकी one. देशों की जो करेंसी है उनके मुकाबले अमेरिका की करेंसी जो है स्थायी है। उसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। You want to see Baba? The note, ask Baba, I have American currency. No, my now उनके पास है बोल रहे True, Baba. Yes, Baba, because number one currency in the world, Baba, I think Baba knows, is America. Everything is compared to America. All the other currencies are compared to America, is hedged against American value. जो वैल्यू कंपेयर किया जाता है ना, जैसे अपने स्तर This के is- लोगों से this जैसे is beyond अपने से discussion. ऊंचे This one is हाई पे cut, कंपेयर किया cut. जाता है कि हम कितने नीचे हैं, हमें पहुंचना है। उस हिसाब से लोग अपनी करेंसी को अमेरिका की करेंसी से कंपेयर करते हैं। And you see the Indian currency, scribble. Everywhere they scribble on the note, but not in Malaysia, not a lot. Not enough. America, not a lot. But Indian currency, we are not sad. Even though we are not born in it. We are everywhere they scribble. They don't value. No वो value to them. भारत की जो करेंसी है उस पे हर जगह नोटों पे लिखा रहता है ना, कुछ भी लिख देते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। लेकिन मलेशिया की करेंसी पे ऐसा नहीं है, और हमें ये देख के बहुत मतलब भले हम इंडियंस नहीं है लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे लिखते हैं लोग, कुछ भी लिख देते हैं उस पे आलतू फालतू। वो तो स्थूल करेंसी है। दैट इज द फिजिकल। Yes, it's a physical note that you cannot write. Only Asli in India currency they क्या है? write. व्हाट इज द India ट्रू they करेंसी? write. Every note got ट्रू writing. करेंसी। Yeah, because for it to take place, the scribble to take place, the shooting should take place in confluence to live. उसकी शूटिंग भी होनी चाहिए ना, है? उसकी शूटिंग भी होनी चाहिए ना कॉन्फ्लुएंस एज, मतलब संगम युग में उसकी शूटिंग होनी चाहिए ज्ञान ना। धन द नॉलेज, द वेल्थ ऑफ नॉलेज। The wealth of knowledge, they don't have respect for the wealth of knowledge, is it? उन्हें कोई रेस्पेक्ट नहीं है, मतलब उन्हें कोई आदर नहीं है ज्ञान धन का, हाँ इसलिए वो ऐसे करते हैं। हाँ जी। यस। That's why most Tamo Pradhan Bharat, they got no value to the knowledge. Yeah, correct. Okay, we've come back to Gyan from that. This also is beyond interesting. It's related to everything. What is Yes, happening in the outside world is related to conflict. जो कुछ बाहर होता है वो संगम युग अंदर में। होगा। Mataji was asking me to note down some question. You remember anything? No, I think that it came up in the Acha. discussion. The Yeah. same thing was. Yeah, Similar, you asked. yes. The helicopter thing. Yes, Baba. Baba will go on. Okay, the helicopter thing. I don't know about the helicopter thing. क्या? Okay. Baba, at the end, Baba, when transport, at the end, when some of the PBK souls are all over in different foreign countries to serve, then how are they going to come back to Madhuban? I thought I read somewhere, Baba says, oh, there is helicopter service, isn't it, at the end? It need not be any other service, they can't come through rail or road or whatever, but there is helicopter service. So, and somewhere somebody told me that
Baba wants to send some of the brothers to learn helicopter license. Is that true? बाबा वो पूछ रहे हैं कि बाबा ने कहा है ना जो सर्विस के लिए लोग दूसरे से देशों में जाएंगे, जो गए हुए हैं उनको वापस लाने के लिए तो रेलवे और रोडवे तो काम नहीं करेगा। बाबा ने कहा हेलीकॉप्टर्स जो है वो काम आएंगे। तो बाबा ने ये भी सुनना है कि बाबा ने कुछ भाइयों को सीखने ट्रेनिंग लेने के लिए बोला है ड्राइविंग का, और हेलीकॉप्टर ड्राइविंग का पायलट लाइसेंस। हेलीकॉप्टर की जरूरत ही कहाँ रही, अभी तो कार ऐसी निकल पड़ी है कि वो उड़ जाती है, उसके लिए रनवे की भी Now you जरूरत see, if you see natural You have disaster, understood, Mataji? Baba, Nowadays, Ah. such a car has been Four-wheeler. there is a natural disaster. no, not disasters. They fly. They run on road Yeah, as well as they fly. Yes. Sorry. Sometimes cars can can see. see. Cars have been invented. Run on the floor, they can fly. So there is no Fly need of too. helicopter, but cars can also fly. Cars can also fly. They have been invented. They are new cars are invented. They run on the road as well as they fly. You mean before 2036? Now it's invented in the outside world. Where is it invented? I have You not must come have across read it. the newspaper. You see, you have been Huh? printed in the newspaper. I have seen. Mataji has seen. seen. What is it? I have seen they fly cars. Not long distance, short distance. Right? They fly cars. Yeah, the after. cars can go on the road. Then As it well as flies. they fly. Yes. Okay, but you show see me the the website. Discovery Channel. Oh, We saw in the Discovery Right. Channel. They're inventing these cars, is it? ग्लाइडर तो थोड़ी देर दूर तक ही उड़ता है। Glider just flies to some distance. हाँ, लेकिन वो कार तो दूर तक भी उड़ती है। But that goes to far away. It covers a far Because what long I और distance. उसको रनवे की भी जरूरत नहीं, हेलीकॉप्टर की तरह। There is no need of runway like helicopters need the runway. But helicopter no need runways also. You know why? ऐसे नहीं, As वो like planes helicopter. planes को runway चाहिए होता है, हैं? helicopter को runway नहीं नहीं चाहिए। नहीं, सिर्फ ऐसे land वो के- कार भी हाँ, it just lands like helicopter. So now, Baba, because why I'm saying helicopter? Because now, if you look at natural disasters, how are they getting these people? They're saving the people with helicopters. So Baba mentioned that in once. I don't know whether Baba was joking or what, but I thought Baba mentioned, oh, there is helicopters, isn't it, to pick up all these souls who was serving in other countries, you see, during war. So I don't know whether Baba said it as a joke or whether it really will be. बाबा, जैसे प्राकृतिक आपदाएं अभी होती है ना, हाँ, तो उनको फूड, क्लोथिंग और शेल्टर जो प्रोवाइड किया जाता है वो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर से से किया उनको जाता है। उठाया भी जाता है। हाँ। तो कंपेयर उस चीज़ को कंपेयर करते हुए मुझे ये नहीं पता कि बाबा ने जोक किया है या बाबा ने रियली ऐसे बोला है कि बच्चों को भी उससे उठाया जाएगा। जो अपने ज्ञानी आत्मा हैं वो देश विदेश में भेजे जाएंगे, भेजे जा रहे हैं, बेसिक में भी भेजे गए, एडवांस में भी भेजे जाएंगे। The knowledgeable souls are sent even now and they will be sent like in DKS. Yeah, They they'll be have- sent all over. Then In they'll be advance serving also during they'll the be war. sent. Hmm? They will be sent in other countries. Then how are they coming back? वापस कैसे आएंगे? How will they come back? That's what I thought. Baba said how the helicopter They will pick up. they will be picked up by some उठा लिया जाएगा उनको। by what? By what? किससे? हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर। Huh? Through helicopter. Ah, that's what I was thinking. I thought Baba was joking or what? Okay, correct. Okay, correct. Confirmed. So Baba will pick us up. Three. Baba मलेशिया come में pick पड़े us रहो। up. War in Malaysia. Baba come You pick see us in up. Malaysia. You think that Baba will pick up? Pick up. Baba will pick up. Oh gosh. Have a good laugh. Okay. Thank you. I don't know unless assistance. In Ramayana, Ram is not shown looking poison. Okay, you want to tell that first? No. Okay, in Ramayana, Ram is not shown drinking poison, but Shankar is shown drinking poison. So, I want to know when it is said the moon, the soul of the moon is eclipsed.
Was it eclipsed when the soul of moon was alive or after entering into the body of Ram? Eclipse. He said the soul of moon is eclipsed. So was it eclipsed when the soul of the moon was alive before 1969, or was it, if he said the soul of the moon eclipsed after it entered the body of Ram? अच्छा बाबा, वो बताया ना रामायण में राम को विष पीते हुए नहीं दिखाया गया क्या है। नहीं दिखाया गया? राम को विष पीते हुए नहीं दिखाया गया है। रामायण में राम को विष पीते हुए नहीं दिखाया गया है। कि वे विष पीते हुए नहीं दिखाया गया है। हाँ तो ये बोला है ना कि ग्रहण लगता है। हाँ ग्रहण की जो बात है वो 69 के पहले की बात है, जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे, या वो प्रवेशता होने की बाद की बात है? शरीर छोड़कर जब ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं राम वाली आत्मा में। हाँ, हाँ। तब की बात है, जो ग्रहण की बात है, या वो जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब की बात है? ब्रह्मा बाबा जब प्रवेश करते हैं शरीर छोड़ने के बाद, तो उस समय तो वो चंद्रमा के रूप में प्रवेश करते हैं। And Brahma Baba enters after leaving his body. He enters, in a crimson. The moon is shown crimson. Crescent, yes. Crimson, हाँ. 76 है। It is 76. 76, so before when he was alive, it was not eclipsed. It was the phrase, Olive Baba says, the soul of moon was eclipsed. So it was not when he was alive. माने जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब की बात नहीं है, जो ग्रहण की बात है। जब ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी 6-7 साल तक प्रवेश नहीं करते, 76 से प्रवेश करते हैं। he enters in 76. After leaving the body, immediately he doesn't enter in. After 6-7 years he enters in. So when 1969, when the soul of Brahma passed away, he never entered the body of Ram. Nah, he didn't enter immediately. After 6-7 years, Baba is saying. Oh, what was he doing? जो 6-7 साल है ना, हाँ। 6-7 साल के बाद प्रवेश करते हैं, तो 6-7 साल में क्या कर रहे थे? ब्रह्मा बाबा हाँ, 6 साल दूसरे बच्चों में प्रवेश करते हैं। he entered in some other The children. soul of Shiva entered. The soul of Shiva entered in 1969 after Brahma passed away. In the soul of Ram. राम वाली आत्मा में सुप्रीम सोल 70, मतलब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद 69 बाबा कोई ऊपर थोड़ी चले जाते, वो तो नीचे ही रहते हैं। हाँ, तो राम वाली आत्मा में प्रवेश हाँ, होते हैं तुरंत 69 में। यस। Okay, when the soul of Brahma was eclipsed from 1976. The soul of Brahma. ये बाबा दिन से ना एग्जैक्ट ईयर Yeah, Baba said just now 1976. Huh? ना, बाबा said after 6-7 years he entered. Yeah, he entered and then he was eclipsed. Is it the soul of Brahma? The soul of the moon was eclipsed. So I want to know, when the soul of the moon is eclipsed or was eclipsed, is the soul of Ram influenced by it or not? बाबा वो मैं नहीं जानती कि वो पहले से ग्रहण लग चुका था या प्रवेश करने के बाद की बात है। किसमें? राम वाली आत्मा में। राम वाली आत्मा में ग्रहण क्यों लगता है? नहीं, जब प्रवेश होते हैं तब ग्रहण लगता है ना, उनको नहीं, शरीरधारी को नहीं, जो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा है। वाली आत्मा हाँ में। हाँ, तो ये नहीं मुझे पता कि वो पहले से उनको ग्रहण लग चुका है या प्रवेश करते हैं तब ग्रहण लगता है, लेकिन जो ग्रहण लगा है उसका संकरण राम वाली आत्मा को नहीं लगता। नहीं? नो, He is not. Why is it the soul of Ram? He cannot control the soul of the moon's voices. Is he unable to control the moon's voices? No. Okay, let me change the question. है? Let me change the question. Okay, because at that time Ram is in corporeal stage. है? मैं ना बाबा I वो ना changed. I put it in a different way. Okay, so from 1976, the soul of Ram, he attains the incorporeal stage. 76. Yeah, he attains the incorporeal stage, but so when the soul of moon enters the body of Ram, and the soul of moon becomes Bogi. He becomes Bogi. What Baba says is Bogi. So, can Ram, how am I going to say?
Isn't Ram able to control? Isn't Ram cannot change him, cannot influence him to attain the sixth stage? Because Ram is in the incorporeal stage. है ना, राम वाली आत्मा तो निराकारी स्टेज को प्राप्त कर लेती है ना 76 तक। 76 निराकारी स्टेज को प्राप्त करने का तौल क्या है? What is the measure? What is, how do you judge that he has 100% निराकारी attained stage है। the 100% incorporeal stage or he has? और 1% है। How will you judge? How we judge the incorporeal stage? By more students coming in. More students coming ज़्यादा in. The जिज्ञासु। incorporeal stage pull the students, attracts or pull. निराकारी स्टेज जो है वो जिज्ञासुओं को प्रभावित करती है, वो खींचती है। नहीं, No. 100% निराकारी स्टेज होगी तो सारी दुनिया में शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। When he will be attained the complete incorporeal stage, then he will get revealed in the world, in the entire world, in front of the entire world. जो देखे इन आंखों से, He will what? जो देखे इन आंखों से, जैसे गुरु नानक को जिसने देखा गुरु नानक की आंखों की तरफ, वो सिख धर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे क्राइस्ट को जिन्होंने देखा उन आंखों के द्वारा, वो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए उस समय। महात्मा बुद्ध को जिन्होंने देखा इन आंखों के द्वारा निराकारी स्टेज में, वो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही जब 100% निराकारी स्टेज शंकर की बन जाती है तो उस समय जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, वो कहे मेरा बाबा आ गया। Baba is saying he should be attracted toward this. Whoever will look at the eyes, whoever will look at him, they should be get attracted. Like when the soul of Sikh religion, Guru Nanak came, whoever looked at him, his incorporeal stage, Baba is pointing towards his incorporeal stage. Whoever looked at him, he just converted to the Sikh religion. When the Christ came, when he looked in the he was having an incorporeal stage as he was a new soul. So whoever looked at him, they converted into the Christian religion. The same like Buddha, whoever looked at him, they converted into the Buddhism. So in this way, whoever looks at the Father, whoever listens to him, they should get converted. Yeah, but They should accept that God has come. yes, but by now, but because you see so My many. Father has come. Yeah. So what I'm telling that his incorporeal stage is such that the PVK centers are increasing. That is the sign of the incorporeal stage. पीवी के सेंटर्स बढ़ रहे हैं तो ये निराकारी स्टेज की तो भक्ति मार्ग तो बढ़ता ही रहता है। The path of devotion gets wider. It's get increasing. But this is a part of knowledge. AIVV is a part of knowledge. लेकिन ये तो ज्ञान वृक्ष बढ़ता रहता है, बीज छोटा ही रहता है। The trees will and the tree Expanding. expanses, but the seed is still small. डिटैच्ड, वृक्ष से डिटैच भी हो जाता है। It gets detached. Yeah, with so the that's the tree. sign of the incorporeal stage. तो ये निराकारी स्टेज की निशानी है। हाँ, निराकारी स्टेज की निशानी है कि दुनिया का आकर्षण उसे आकर्षित नहीं करता, The वो अपनी स्टेज में स्थिर रहता है। निराकारी स्टेज में he is firm in his incorporeal stage. He is not attracted towards the attraction of the world. The others are attracted to him. दूसरे उनसे प्रभावित होते हैं. दूसरे प्रभावित होंगे। Yes, the others are attracted. But of course he is not attracted to anyone. He's So it's the soul of Krishna's intention to bring down Ram. Is it? He wants to bring Ram down. Is it? Down meaning To Make him in a low position. Downfall. Okay. Soul of Krishna, The soul, his intention. Is the Krishna's soul's intention to cause downfall for Ram by doing all this. By being engaged in the vices. कृष्ण वाली आत्मा जो है, हैं? कृष्ण वाली जो आत्मा है वो
राम वाली आत्मा को नीचे गिराना चाहती है, हाँ, विकारों में भी। तो बैल है, बैल बुल- बैल अभी शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? अभी क्या है? is the bull riding on Shankar or is Shankar riding on bull? What is he now? What is happening? Bull is riding, बैल सवार है। हाँ जी। Yes. Anand ji, your question. What is Rama's first question? You are asking what Ram doesn't bring poison, but I just want to know because once it is said the soul of moon eclipse, I want to know whether after when he was alive or after he entered Nubha. बाबा वो ग्रहण की बात ही वो पूछ रहे हैं। हाँ। जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं तो 6-7 साल तक वो प्रवेश नहीं करते हैं ना, हैं? 6-7 वर्षों तक तो प्रवेश नहीं करते, उसके बाद प्रवेश करते हैं। हाँ। तो ये जो ग्रहण की बात है ना, प्रवेश करने के पहले ब्रह्मा बाबा को ग्रहण लग चुका था या वो प्रवेश करते हैं तब वो ग्रहण लगा हुआ माना जाएगा? ग्रहण लगना माने अंधियारे में होना, अंधियारे में होना माने ब्रह्मा की रात, तो पहले से ही रात है। To cause eclipse means to be in the ignorance of knowledge, in the darkness, and he is ignorant from before itself. क्या? Baba, after drinking water. बाबा No. What I want to ask, no, actually, what I want to know is, so that means now currently the bull is riding on Shankar. So the bull's purity is higher than Shankar, is it? इस समय बैल शंकर पर सवार है तो बैल की ज्यादा प्योरिटी है ना। वो माँ वाली आत्मा है या बाप वाली आत्मा? Is it the soul of a mother or the father? माँ वाली आत्मा। वो फीमेल है स्वभाव संस्कारों से या मेल है? Is he female or male according to his क्या है? female? ब्रह्मा वाली आत्मा, मेल फीमेल? Female. Brahma, Jagadamba. हाँ हाँ, क्या है, मेल या फीमेल? Female. फीमेल। दुर्योधन दुशासन कौन? And who is When he was Duryodhana? alive, he was Duryodhana Dushashan. that was in a male. But who is Duryodhana? माने राम और कृष्ण की आत्माओं के बीच की बात है। हाँ हाँ हाँ। Among the souls of Ram and Krishna, who is Duryodhana Dushasana? Both. बहुत कैसे? Both male bodies. कन्या माताएं दुर्योधन दुशासन होती हैं या पुरुष दुर्योधन दुशासन होते हैं? Baba, even if Shankar is in a male body, he is Duryodhana Dushashan, but his purity level is so high. बाबा वो बोल रहे हैं ना, भले कृष्ण की आत्मा उसमें है लेकिन उनकी प्योरिटी बहुत ज्यादा है। No, the soul, not Krishna, Shankar. कृष्ण हाँ राम वाली आत्मा है ना, हाँ। Even though he is राम वाली आत्मा की प्योरिटी ज्यादा है। क्योंकि शिव प्रवेश है इसलिए ज्यादा है, बिकॉज नहीं तो कुछ भी नहीं। बिकॉज Because the supreme soul is in him. हाँ। Yeah. सो ही हैज मोर प्योरिटी। yeah, but then his purity is higher than Krishna. कृष्ण की प्योरिटी से तो राम वाली आत्मा की प्योरिटी ज्यादा राम वाली आत्मा की प्योरिटी नहीं है, शिव प्रवेश है, उसकी प्योरिटी ज्यादा है। देयर इज नो प्योरिटी ऑफ राम बिकॉज द सुप्रीम सोल हैज एंटर्ड, दिस इज व्हाई ही इज प्योर। Otherwise, Ram will not have that purity. No, Ram has purity. गिर because गया the moment- नीचे, No, Baba. डाउन, पके। I like No, Baba. Because the moment, because it is read in the old VCDs, the moment ship enters, he is colored by ship's company. So the moment itself, he has no impure thoughts. So that he is doing the shooting for the other birds. In the broad drama, he is doing the shooting now of purity. Because his mind is always clean. As soon as the supreme soul Yeah, enters, he is colored. That's why. बस जैसे ही सुप्रीम सोल एंटर होते हैं, प्रवेश होते हैं, तो राम वाली आत्मा के जो संकल्प है ना वो क्लीन मतलब वो पवित्र हो जाते हैं। वो राम वाली आत्मा तो इम्प्योर नहीं रहती है फिर। माना जो नेगेटिव संकल्प हैं वो नहीं आते। इट मीन्स ही डजंट हैव नेगेटिव थॉट्स। That is लेकिन ये नहीं ना कि वो पवित्र है हाँ, ना, इट डजंट मीन दैट ही इज प्योर बट ही हैज पॉजिटिव थॉट्स। yeah, पवित्र because 100% पवित्र हो जाएगी तो शिव और शंकर मिलके एक हो जाएंगे। शिव शंकर बोले ना, when he will become 100% pure, then the soul of
supreme soul and solar form, they will become combine and together Shiv Shankar Bholenath, they become Shiv Shankar Bholenath. Not to have negative thoughts means not to have impure thoughts too. नेगेटिव थॉट्स का ना होना माना इम्प्योर थॉट्स भी नहीं है, है? अपवित्र संकल्प भी नहीं है, नेगेटिव थॉट्स नहीं है माना। निगेटिव माने अपन, हाँ, अपवित्र संकल्प नहीं है। निगेटिव माने अपवित्र। नेगेटिव इटसेल्फ मीन्स इम्प्योरिटी। तो बाबा उनका कहना है, बाबा ने बोला ना जैसे प्रवेश करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स नहीं रहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। ज्ञान युक्त हाँ, संकल्प। तो पॉजिटिव थॉट्स आ गए तो पवित्र हो गए ना, ऐसा उनका प्रश्न है ना। नेगेटिव थॉट्स तो रहे ही नहीं। शरीर तो नहीं पवित्र हो गया, द बॉडी इंद्रियां तो नहीं पवित्र हो गई, but the body hasn't become pure, the organs haven't become pure. Yeah, the most important thing is the soul. The soul should become pure. When the soul becomes pure, automatically the body becomes pure. लेकिन मुख्य बात तो आत्मा की है ना, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो शरीर भी पवित्र बन जाएगा। आत्मा पहले पवित्र बने, शरीर बाद में पवित्र बनेगा। The soul शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। पहले चैतन्य सुधरेगा कि पहले जड़ सुधरेगा? the soul will become pure first and then the body, but the soul is what do you say, chaitanya, living, and the body is inert, non-living. So will the living become pure first or will the non-living? The living will become pure. नेचर जड़ है और आत्मा चैतन्य है। पहले आत्मा सुधरेगी ज्ञान के द्वारा कि जड़ नेचर ज्ञान को ग्रहण करेगी और सुधरेगी? The nature is inert and the soul is living. So will the nature will become transformed first, pure, or will the soul will become living? Atma, the soul will become. हाँ, पहले पवित्र आत्मा बने, The soul फिर will शरीर पवित्र बनेगा the बाद में। soul will become pure and then the body later on. Now the most important question, Baba. You are saying you are revealed or will be revealed around 17, 18. That means completion is done. The first eight Ashtadevs, couples are already established. So therefore, when is Lakshmi coming? The big question now. Lakshmi should be already coming any time now, isn't it? To clean, because भगवान आया हुआ Because है, नहीं आया हुआ है, अष्टदेव Completion. संपन्न होंगे इस वर्ष में, ये सारी बाबा ने बात बोली। लेकिन लक्ष्मी कब आएगी? एक्चुअली जो जिनको आना है वो लक्ष्मी कब आएगी? अंत में, At the end. at the end. So भारत it's माता actually शिव not- शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। So she The doesn't. mother incarnation She only comes after the is the cleanup. slogan of the end. After the cleanup, she comes. हाँ? She comes after the cleanup. सफाई होने के बाद But it's after, at the end, it's after 18. She comes, is it? हाँ? After Or the before Mahakali, with the two brooms is shown, is it? Baba says Mahakali having two brooms in her hand. हाँ. After the cleansing, then she comes. मैंने महाकाली को 2 झाड़ू दिखाए गए ना हाथों में, वो सफाई होने के बाद लक्ष्मी आएगी। हाँ, Yes. अब सफाई कहाँ हुई है? Okay, she comes at the The end. cleaning hasn't started. Yeah. Hasn't done. No, but that means if she comes Eh? at the end, means it has to be before 18 or after 18, because she's revealed in a complete form. That means she must have taken the advanced knowledge before that. Hmm? Lakshmi soul. Then what have you asked? No, the question is, she's coming at the end. Hmm. Okay, she comes after the cleanup. Hmm. So we don't have much time on the cleanup now. Looks like it. Okay, so now, so Lakshmi has to come and take advanced knowledge first. So obviously she cannot be revealed until she is a complete soul with advanced knowledge. She becomes part of the other half of Baba. Other half of Narayan. Sorry. So therefore, is this after 18? When Baba says she comes at the end, or it has to be, to my understanding, I think it has to be just before 18. Because she comes and she goes fast. वो She doesn't मैंने need बाबा much ने बोला time. ना सफाई के बाद लक्ष्मी आएगी। जैसे हमारे पास अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है सफाई का, तो
लक्ष्मी जो है वो 2018 के बाद आएगी या उसके पहले? मेरे हिसाब से पहले ही आना चाहिए। पहले कैसे आएगी? सफाई नहीं होगी तब तक कैसे आ जाएगी? How can she come first until the cleaning is not completed? Yeah, the cleaning has to complete, but she has to come before 18, isn't it? Because before her revelation, isn't it? That's what I'm trying to find मैंने out. 18 में जो है उनकी Find प्रत्यक्ष, out. 18 से पहले जैसे राम वाली आत्मा के लिए बोला है ना, एक जोड़ी तो तैयार हो जाएगी, तो उनकी प्रत्यक्षता तो तभी है ना, साथ साथ में है, जोड़ी है ना, हाँ, तो उसकी पहले सफाई हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। तो 18 के पहले आ जाना चाहिए उनको, ज्ञान लेगी तभी तो वो Because she Add doesn't होगी। take much time to become. तो पहले आ जाना चाहिए, 18 से पहले, तो उसके पहले ही सफाई हो जानी चाहिए। वो भगत है कि ज्ञानी है? Is she a devotee or a knowledgeable soul? Yeah, as a knowledgeable soul, she has to. Huh? Well, sorry, what you said? What you said? Say again. Is she a devotee or a knowledgeable Who soul? is devotee? Lakshmi. Now, I mean, she comes. Okay, now I'm a little bit confused here. She has to be knowledgeable upon revelation, Yeah. isn't it? Upon revelation, Baba is asking about the present upon time. revelation, she has to be knowledgeable. So now she is a devotee soul. After revelation, she will be a knowledgeable soul. So she has to. So, does she come as a devotee soul or does she come after 18 as a knowledgeable? Knowledge. Yeah, that's what I'm a bit confused. The timing here. प्रत्यक्षता के बाद तो वो ज्ञानी तो आत्मा ही कहेंगे। प्रत्यक्षता के पहले तो बाद भक्ति, ना, हाँ। अभी क्या है? इसके पहले तो भक्ति भक्ति है। हाँ। भक्ति न है, तुम सब सीताएं हो। नंबर 1 सीता भी, Number 1 Sita. नंबर 1 सीता भी भक्ति है। हम्म। भक्ति है ना? Baba has said you all are Sita. So the number 1 Sita she is in bhakti. She is a devotee. She is a devotee. What now? Baba is asking you. Yeah, we are not. We are all in knowledge now. Okay. No. Baba is asking about Lakshmi. Yes, I know, but he's saying we are all Sitas now. Uh-huh. Okay. So we are all number-wise knowledge. Okay. So she is a devotee now. डिवोटी ना, Devotee now. डिवोटी। Yeah. और डिवोटी जो है वो भटकता है, इधर गया, उधर गया, उधर गया, उधर गया, 4 गांव में भटकता फिरता है। The devotee wanders around. He wanders in the 4 Correct. abodes. Correct. But the question is, if she has to come and take knowledge, correct? नहीं, When does she come to take knowledge? She comes after the cleanup, right? It has to be before wants the to say 18, something. right? Okay, sorry. वो भटकने का मतलब ये है कि पहले वो महाकाली के सामने भटके, फिर जमुना के सामने भटके, फिर गंगा के सामने भटके, लास्ट में जब गंगा जाती है तब ब्रह्मपुत्र नदी आके उससे मिलती है। Wandering itself means first she wanders in front of the Jagdamba, then in front of Ganga, Jamuna, and then in front of Ganga. And when she meets Ganga, she wanders in front of Ganga. So the Brahmaputra goes and meets Ganga. Okay, that is. गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से जाके मिलती है, Ganga meets Brahmaputra. आसाम। Well, now you got me very confused now. हाँ. Okay, let's फिर- go more basic now. Okay. सारी नदियां मिलकर के इकट्ठी होकर के सागर से टकराती हैं, Okay, that These means all बड़ी rivers- ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है पानी की These all rivers, कलकत्ते में। they come and clash with the father. alright. All of us come to it, And a big ocean. And a Okay. big wall has been erected. which is Brahmaputra. Brahmaputra is not the ocean. All the rivers. All the rivers. will clash with the ocean. And a Okay. big wall has Wall been is erected. okay. और लास्ट में जाके मिल जाती And at last they all go and mix up with ocean. है। वो So लक्ष्मी she मिल comes जाती to take. So the question is, she comes to take knowledge only after 18, is it? Not before 18, is it? वो That's what सीधी I'm knowledge saying. नहीं लेती, All the सागर- clashes are going on सागर से before that. सीधी नहीं मिलती है। She doesn't come and directly meets the ocean. Baba explained you. So this is the way how she comes. She doesn't come and directly meets the ocean. All the rivers Yes. come and meet the ocean. ब्रह्मपुत्रा भी रिवर्स के साथ मिलती है। Okay. So in Brahmaputra, she comes
all. She So mixes if with I all the understand rivers. that, I don't know if I've understood it correctly, but if I understand that, that means it has to be after 18, no? 18 के बाद की बात है ना फिर. हाँ Okay. Then only she comes and picks up her knowledge. After 18. After 18. 18 के बाद ही वो आके ज्ञान लेंगे. तीनों नदियाँ पहले आपस में मिलती हैं इलाहाबाद में. हाँ, the 3 rivers they get first mixed in Allahabad. आगे बढ़ कर के फिर जब आसाम बंगाल तक पहुंचती है गंगा, तो जो ऊपर ऊपर ऊंची ऊंची स्टेज में पवित्रता की ऊंची पहाड़ी पर उतरते उतरते जब तो आसाम में गुवाहाटी में जाकर के गंगा मिलती है वहाँ ब्रह्मपुत्र से. From This Miss Saraswati, Yamuna, in Assam, and what She- is the other river? सरस्वती यमुना गंगा Ganga, okay. Ganga is Lakshmi. त्रिवेणी संगम. She is Lakshmi. She comes the down. meeting of 3 Veni itself means the Ganga is meeting of last. 3 rivers. Ganga is Lakshmi. isn't it? No. Ganga is but is Ask father. Brahmaputra is like okay. No. Lakshmi is sorry. Say something. Lakshmi is Brahmaputra. हाँ Okay. So okay. Now Bra- because I'm Bra- getting Bra- confused with the thing. वो भक्ति मार्ग में उसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्री. In the path of devotion, she is called as Brahmaputri. Okay, but in part of knowledge she is Brahmaputra. ब्रह्मा की पुत्री. Okay, Lakshmi. Okay, then Ganga is who? Ganga कौन है? is who? है गंगा कौन है? गंगा वो है जो बेसिक नॉलेज को भी और एडवांस नॉलेज को भी पहले ज्ञान सूर्य से समझती है. Ganga is the one who understands the knowledge from the ocean of sun of knowledge in the basic and in basic as well as in advanced initially at first. That means that that's why I'm trying to place who the person is. Is that Mama? Nah, it has been cleared in course itself. They clear the role in course itself. The role of the Ganga has been cleared in course itself. During the course, you have been cleared with that role. I can't remember that. What point was it? Confusing. I can't remember that. हैं? उनको याद नहीं है गंगा कौन है. क्या? गंगा कौन है उनको याद नहीं है. कौन है? उनको याद नहीं है गंगा किसका पार्ट है, उनको याद नहीं है. There's so many. जगदम्बा छोटी Because I बच्ची know होती है. Saraswati is सुनो तो. लिसन माता जी. जगदम्बा छोटी बच्ची होती है हाँ. सन 76, 77, 78 में, और गंगा 16, 17 साल की होती है, समझदार. तो एडवांस नॉलेज सुनती तो वो बच्ची भी है, लेकिन बच्ची बुद्धि होने के समझ में नहीं आता. और जो वो 16, 17 साल की गंगा है, वो पहले उस ज्ञान को सुनती है और समझती भी है गहराई से. In 76, 77, 78 approximately these years, the Jagdamba is a child. Yes. But Ganga, she is about 16 to 17 years. She is around 16 to 17 years age. She has the age of 16, 17. So she receives the knowledge first. She is a child. She cannot receive knowledge. So But as she is a teenager, she जगदम्बा receives बच्ची. knowledge. Okay, Jagdamba was a child. Okay, जगदम्बा 9 years. बच्चा बुद्धि. Yeah, Bacha Buddhi. Na- बच्चा बुद्धि. She was a 9 years old. No. She's Come but on. with the child intellect. Hmm. Child intellect. Hmm. Okay. और गंगा जो है वो Is Baba talking about the same person now? That's what I'm confused. Same person. Is the child intellect and the more mature intellect? Jagdamba is two. Okay. Ganga is the one who receives knowledge first. Initially, No, I she don't know receives who knowledge. that. I don't know And who she that soul was- is. I can't remember who that soul is. Can you clarify that to me? जगदम्बा मालूम है? Yes. जगदम्बा मालूम. Yes. जगदम्बा 66 में बर्थ, Yes. 66 में Yes, 70, correct.
76 में 10 years, Okay, 10 years. Okay. 77 में 11 years 77 she was 11 years old in और 77 78 में 12 years 12 years 12 years. बच्चा बुद्धि। and in 78 Okay. और गंगा 16-17 साल की। and Ganga was about 16 to 17 years old during that. And so that- Near to adult। Okay. Near to an adult. near हाँ near to adulthood. She was near to adult. Okay. She But was a who was teenager that during soul? that. Who was that soul? Because I know बाबा वो Jagadamba. उनको ना हाँ गंगा का In पार्ट the याद नहीं आ रहा है living किसका form है, is है किसका पार्ट है उनको याद नहीं आ रहा है गंगा Who is का। that soul? उनको पता है जगदम्बा कौन है उनकी बुद्धि में, गंगा कौन है उनको ये नहीं आ बाबा रहा। ने बोला गंगा अव्यक्तवाणी बोला गंगा कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली। It has been said in the Avyaktvani that Ganga came from Kanpur or from Allahabad. कहाँ से निकली? From where did she come? I no, this I can't get that. I really can't understand that. वो I'm भूल not चुके clear हैं, on that. वो उनको क्लियर नहीं है वो। लेकिन बाबा ने तो बोला But Baba has said this. Baba has said this. Baba has asked in the Avyaktvani from where did गंगा Ganga कहाँ came से out? निकली? From Allahabad or from Kanpur? कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली? Allahabad or Kanpur? Answer हाँ। it. It's all Murli and I don't know. है क्या? She hadn't heard it. She just joined, No, right? I just joined. She's only 5 months baby. 5 months old baby. वो उन्होंने पुरानी मुरलियाँ नहीं सुनी है। चलो नहीं पढ़ी तो बाबा बता रहे हैं ना। बाबा telling Baba is What's giving telling? you Okay, what is the हाँ। answer now? गंगा कहाँ से निकली? कानपुर से निकली, इलाहाबाद से निकली। from where did Ganga come from Kanpur or she came from Allahabad? From where did she come? I don't know where she's coming from Kanpur, is it? So listen. तो जो जानेगा वही तो जवाब देगा। Okay. So the one who knows can himself give the answer. तो जो जानता है वो ही जवाब देता है कि गंगा 78 में कानपुर में सारा ज्ञान सुनती रही है एक Want to साल hear. तक। कानपुर She doesn't want कान to भर गए। So the one who knows, he himself is answering you. In 76, she heard the entire knowledge and her ears were filled with knowledge. तो नाम पड़ गया कानपुर। So the name was been given Kanpur because her ears were filled with knowledge. और उस समय बेसिक की जो दादी थी, बेसिक वाली, बेसिक ज्ञान वाली ब्रह्मा कुमारियों की जो दादी, वो कानपुर में हेड ऑफ द इंचार्ज, So the जोनल इंचार्ज कानपुर में। तो बेसिक वाली गंगा दादी वो भी कानपुर में इंचार्ज, और एडवांस की गंगा वो भी कानपुर में। the Dadi, Gange Dadi, she was the in charge of the basic center at Kanpur. And here also in advance, Ganga, she was also the in charge in advance. I don't know. Still, I don't know who that person is. That's But you have slightly understood from where does she comes. okay. Huh? No. You have got the idea from where does she comes. From where does she comes. Oh my God. From Kanpur. मैंने हम बाबा हमने पूछा आपको आइडिया तो हो गया होगा ना, बाबा ने इतना बता दिया वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से निकले हैं, तो बोले हाँ It's going in तो कहाँ से circles आए now. हैं? नियर टू फरफाबाद। It's going in circles. The answer is, I'm looking for a very simple answer here. Who is that person? Jagadamba, we know the living form is वही तो Mama. बता रहे हैं। Mama. वही तो बता रहे हैं। That. That's what Baba is saying. Sorry? Okay, sorry. Tell me. वही बता रहे हैं। आपने कहा गंगा कौन, तो वो तो अभी मैदान में नहीं आई ना, जगदम्बा तो मैदान में आ गई। She didn't come. सारे जगत की आत्माओं को, बीज रूप आत्माओं को जन्म दे दिया। She didn't Jagdamba come. ne. She didn't come into the field. Jagdamba has come into the field. The Ganga hasn't come into the field. And Jagdamba has given birth to we all. Is about to be revealed to you. वो प्रत्यक्ष होने वाले हैं ना उनको. हाँ। Yes. गंगाएं अंत में निकली हैं। The Gangas. They are लक्ष्मी के revealed निकलने at से the कुछ पहले गंगा निकलती है। end. Ganga comes before the revelation of Lakshmi. And Yamuna is actually यमुना पहले, सबसे पहले।
Yamuna is at the very beginning. Okay, Yamuna is the very Is beginning. at the very beginning. Yamuna is Maya. Maya. नहीं। No. Also different. वो बीज I'm रूप getting माया। very confused. She is the seed form. She is She's the form seed soul. form of Maya. The form of Maya and the seed form. Okay, Prem Khanta. हाँ। Good God. Phew. Baba, I am not going to pass this exam. Finish. Fail. Final exam fail. ये एग्जाम पास होने वाली Knowledge नहीं हूँ, fail. fail होने वाली Practical fail. नॉलेज में भी प्रैक्टिकल में भी फेल हो Fail. आराम फेल। Ram fail. Baram fell in the beginning only. Last also fail. No. Before 18 also fail. Position Chandal. She is telling about herself. You are telling about yourself. You are telling about yourself. Yeah, I'm just telling about myself. Lah. Then Say Ram fell. Ram fail me. Yeah. This contracts. Oh gosh. Okay. Now I get it. Okay. Baba explains. Sometimes Baba, when you explain this in the with bhakti and all this, sometimes I get a little confused. Because the understanding of bhakti, I don't know. Maybe in my previous life I have learned, but not in this life. So sometimes the confusion as to the characters, it gets a bit भक्ति मार्ग के जो कैरेक्टर्स है ना उसमें हैं? थोड़ा भक्ति मार्ग के जो कैरेक्टर्स है ना जो पाठधारी है भक्ति मार्ग में जो भी पाठ Sometimes, बताया not जाता all. है I उसमें मैं know थोड़ा some कंफ्यूज हो people, जाती some हूँ people शायद मैं don't. भक्ति इतना की नहीं होगी फॉलो नहीं की होगी इसलिए मैं अभी कंफ्यूज होती हूँ Sometimes, Baba, कभी-कभी। some characters, not किसी all. किसी पाठधारियों Get a bit confused. Like all these rivers, I get a bit confused. Yeah. But very good, Baba. Knowledge is excellent. I'm learning a lot. Me, bhajna. Badi. बहुत करो. Knowledge, I'm learning. Very good. Excellent. हिंदी सीखो हिंदी। Hindi also. Knowledge first must know. Hindi second. पहले ज्ञान को जानना है फिर हिंदी Knowledge बाद number 1. हमारी गहराई से समझ में नहीं आती है। यू वोंट अंडरस्टैंड इट डीपली I अंटिल know यू until नो you द know हिंदी Hindi. तो बीच में वो जो मीडिया आता है ना ट्रांसलेशन का उसमें एग्जैक्ट नहीं समझ में आता है। I know, Baba. Right. Correct. So sometimes I have to write to Baba and ask for explanation. I write to you, Baba, ask for explanation. मैं लिखूंगी बाबा को एक्सप्लेनेशन देने के लिए हैं? एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लिखेंगे। बाबा को लिखूंगी प्रश्न Right, जो लिखेंगे। पूछेंगे ना लिखित रूप में पूछूंगी वो लिखा हुआ लिटरेचर है। लिटरेचर प्रश्न करेंगे एक्सप्रेशन जवाब जाएगा लिटरेचर में और जवाब इनकम्प्लीट है दूसरा प्रश्न पैदा हो जाएगा एक्सप्रेशंस नहीं उसका जवाब नहीं मिलेगा फिर इंतजार करो। when you send it writing then you Asking for the you have explanation an may not be explanation as it's in a literature it's in a written way you don't get it and I you know, raise true, an yes. another question raises then you won't get the answer quickly exactly. But what to do? We are so far away. We have to do. This is the best we can do. Or we come Yeah. and meet Baba and ask all these questions. तो क्या करना है बाबा मना ये तो रूबरू। बहुत Make the most of it. रूबरू face सन्मुख to face Yeah. Face like to this face. now. Come once, twice a year. Come meet साल में Baba. एक बार दो बार इसलिए आ करके Okay. So we are done. Only shooting. Shooting.
it wasn't supposed to be 1 hour, it's so long already. See, like one after the other questions come up. But I think it's good questions. Some of the questions came up, it's quite good for my understanding also. Thank you, Baba. It is good. थैंक यू Yeah, thank you. You, Baba, ऊपर वाले को। inside. Thank you for the Yes, it's inside. Vanilla. Inside Baba. Shiv Baba. बाबा के अंदर बाबा के अंदर Baba's forehead. बाबा को थैंक यू बाबा को पता नहीं बाबा डर Shiv Baba telling me. है अंग्रेजी में बोलते हो Wrap it up. Another time, Baba, maybe got more questions, we ask you. You see tomorrow's class, any question? यही प्रश्न है, यही क्वेश्चन आया क्लास में पूछो तो इसका और बढ़िया बढ़िया जवाब मिले। So many people asking. the same question. These are the same question, but when you ask in the class, you get a more good explanation. More good. Good explanation. Oh, but then class, so many people want to ask. So many children want to ask. क्लास में तो और भी बच्चे पूछना चाहते हैं ना। They also हाँ। want to ask, Baba, you see. We cannot all the time dominate. Class, everybody want to have a chance. मैंने to सभी ask. को चांस मिलना चाहिए ना, उन लोगों को पूछना होता है तो हम So डोमिनेट नहीं many कर सकते। Bharatvasis souls want to ask. Then they think we are something dominating. No, by the class, everybody wants to ask. So, we can't like this, so many one-to-one, like this we can't.